Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Iswa. Today, I am going to start subject SPL of Standard 7, and this is fifth video lecture on the topic Women Change the World, Chapter 5. Dear students, as we have discussed and as we have seen the example of Ras Sundari Devi, Ramabai, Pandita Ramabai, Rokaiya Sekhawat Begum. Okay, so these were the some of the example which shows us that how the women they have struggled in their life and further they got the freedom. उन्होंने अपने जो है महिलाओं ने अपने जीवन में सतत प्रयास व संघर्ष किया, जिसके तहत ही आज जो है हम लोग देखते हैं कि लड़कियां और महिलाएं जो है वो अपने काम को सुरक्षापूर्वक कर सकते हैं। इसमें जो है पुरुषों का किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। इसके यहाँ तक कि जो है इन्हें कानूनी रूप से भी बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है तथा इन्हें कानूनी रूप से भी संरक्षण दिया जाता है ताकि महिलाएं जो है वो अपना कार्य सही ढंग से कर सकें। ओके, नाउ एज वी कैन सी दैट वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव्ड, दिस नॉट हैड बीन हैपेंड ऑटोमेटिकली, different type of struggle was there, okay, so that this situation could be changed. Now these all were consolidated known as women's struggle. Okay, it means the struggle done by the women for their own freedom, for their own expressions. Okay, so these were the struggle done by them. Now the women's many of the men also support these women struggles, okay, like the diversity, passion and efforts of those involved make in very vibrant moments. Okay, it means they having the passion that we have to do something for our future. If we will not fight now, then how we will get our rights. It means if the constitution is mentioned that both the men and women they have the equal rights, then why the women they get the less fortunes, as we can say that they also get the less rights. So some of the things beyond this, that our society, okay, our society is also just prevailing these type of mentalities that the between the gender discrimination. Okay, now some glimpse of these struggles are given here, like the campaign. Okay, so the different campaign to fight the discrimination है ना, यानी कि जो भेदभाव के कारण जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता था महिलाओं के साथ, वो उसके लिए जो है तथा एंड द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। जो इसके प्रति जो अलग अलग तरह से जो कैंपेन किया गया, सभा किया गया, उसमें जो वायलेंस यानी कि औरतों के साथ जो हिंसा होती है वो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण था। ओके, एज ए लॉ हैज़ बीन पास्ड, और 2006 में जो है ए लॉ वाज पास्ड that if any woman is being violenced at their home, then it will be under the you can say the act, है ना, legal act, and a legal protection will be given to them। यानी कि ये जो है एक क्या हो जाता है, एक एक्ट हो जाता है जिसके तहत उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देना ये कानून का कर्तव्य है। ये कब मेंशन किया गया? 2006 में, यानी कि एक लॉ जो है वो पास किया गया जिसमें अगर किसी भी तरह से औरतों के साथ घरेलू हिंसा होती है ना, या फिर उन्हें जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो उनके साथ जो है वो कानून का सहारा इस पे ले सकते हैं। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स लेड टू सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेट द गाइडेंस ऑफ 1997 टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि किसी भी, है ना, एनी ऑफ द वुमेन्स और द गर्ल्स, दे नाइदर शुड बी लीडेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन, है ना, इन एनी काइंड in their educational institution or the workplace where they are working.
Okay, so this rule was enacted in 1997. Next, in 1980s, okay, the women's group across the country, they spoke out the dowry deaths, as dowry death was also a serious problem, because the brides, they were killing for the dowry, for the more and more dowry, as the group they demanded, and their family side they used to demand it for the dowries. Then what used to be happen, that for the dowry they used to kill them if their demand used to not fulfilled. Okay, so during the dowry case, the women spoke, groups spoke out against the failure to bring these cases to justice, and they did, coming on street, approaching the court, and by sharing information. Eventually, a public issue in the newspaper and society, that dowry law were changed to punish family who seek the dowries. Okay, and nowadays we can see that in Bihar, this type of system is also prevailing, as our former CM, present CM, they have been started that dowry system is the punishable offense. Okay, that many of the girls, many of the women, they are being killed for the dowry. Okay, now from other part, beyond this, they also raising the awareness. Okay, that women's movements also include that they were raising the अवेयरनेस, दैट इन द लैक ऑफ द अवेयरनेस, है ना, यानी कि जागरूकता की कमी के कारण भी है इन सभी चीज़ों का शिकार होना पड़ता है. सो द वुमेन्स दे हैविंग द राइट्स इशूज थ्रू द मैसेज स्प्रेड थ्रू द प्ले सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग्स. ओके, नाउ प्रोटेस्टिंग, एज वी नो that if any of the law is not in their interest, then they used to violate it. अगर कोई भी लॉ जो है, कोई भी नियम या कानून उनके हक में नहीं होता था, वो इसे क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे और विरोध करते थे, और इस विरोध से जो है उनका ये हक बनता था, दैट दे कुड प्रोटेस्ट वेर एवर एनी लॉ इज़ नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ देम. अगर कोई भी कानून उनका समर्थन नहीं करता है ना, उनके शिकायतों का निवारण नहीं करता है, तो वो इसके प्रति क्या कर सकते थे, उसके प्रति आवाज़ उठा सकते थे. ठीक है, द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो शोइंग द सोलिडारिटी बिटवीन द वुमेन्स एंड द काउजेस, है ना, यानी कि दे वर स्ट्रेंथन while they were opposing, they all the women's, the groups, they all used to be strengthened, and by their unity they also show that there is the also women's power, which the government have to made out the solution. Okay dear students, read the paragraph and keep watching. Thank you.